Time for Ekaki Chapter 3. I'm getting through these. And I'm going to be, everyone knows how I feel about it. I'm going to be less critical this time because, you know, it's still a well-shot series. There are some instances that actually seem good. But we'll see where it goes. Previously on... साला एक बात तो क्लियर है, ये घर ही नहीं पूरा इलाका ही भूतिया है। इस घर में भूत है। ए इधर तो स्केयरक्रो था ना, किधर गया? तो ये साला केयर टेकर जिससे हमारी टेक केयर करनी चाहिए, वो किधर है? काका तो फरार हो गया। हेलो, अरे मैं जाता हूँ, एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। ऊपर आसमान में खतरा है। Aliens. It's funny. I see it. I just get that meme from the History Channel. Aliens. Like, of course. Or like the what is the movie Bolt, where the dog runs away, and you have the pigeon who's just like, wait for it. I got a good idea for a new villain. Aliens. Like, oh my gosh. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। मैं हूं आरजे समय और अगला गाना है मेरे क्रेजी दोस्त का आप सबके लिए, जान दनिया। So this is a what happened before. Two things that either that's a sign of alien life or there's a habitable life outside of the planet. पायलट ने उस इलाके में नीचे उड़ान भरी, पर उसे कोई यूएफओ नहीं दिखा। एलियन्स चांगलेच असतील असं आपण समजू शकत नाही। Yep, so this is like before what led up to it, I'm guessing. So that's why he was gone. Radio is moaning. Well, you know what aliens do to people. Somebody must have been enjoying it. That's all I'm gonna say. Oh, with this running scene, it's hard to actually animate the UFO properly. Copied the Nope movie. Oh, I need to see that. Jordan Peele does some great work. His Get Out was like a perfect horror film for anyone of color and a perfect comedy for anyone that's white. I watched it with my friend. I had a great time. He was terrified. New opening every time.
JCB. भाई साहब मैंने क्या बोला था, ऐसा पत्ती फूकाऊंगा ना जादू सीधा कचोल से आके अपने साथ फूकेगा। चाइला 150 रुपए में 1000 रुपए का 3D IMAX एक्सपीरियंस है तो। चल क्या कर रहा है? I love you जादू। पागल वागल हो गया क्या? नजारे क्या देख रहा है बाहर? अरे बाहर मेरे को इतना मजा आया। ये तेरे को मजा आ रहा है? तेरे को मजा लग रहा है? अरे मैं तेरे को क्या बोला, मेरे में से 2 ड्रैग पी, तूने बाहर बहुत कुछ मिस किया जादू है। बाहर यूएफओ है तनी, तेरे को यूएफओ समझ आ रहा है क्या होता है? नशे से बाहर आ। अरे 2 घंटा तो लगेगा ना भाई। भाई मुझे लगता है हम लोग अभी भी सोए हुए हैं, नींद में हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, हम नीचे जाग जाएंगे। आर्यन मेरी बात सुन, मेरी जान इधर। मेरी जान, अब तो मैं 100% श्योर हूं सपने में। वरना कार्तिक बिना बेइज्जती किए तो प्लास्टिक Slap से बात him. करता है क्या? देखो करना पड़ेगा। हाँ मैंने इंसेप्शन में देखा था, खुद की जान लेने से इंसान जाग जाता है। मुझे अपना गला काटना पड़ेगा। अरे क्या कर रहा है? अरे रुक जा, पागल हो गया, रुक जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। रियलिटी है। सब पापा मम्मी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते थे? अरे सड़क को छोड़ो, यहाँ पे तो आसमान भी सेफ नहीं है। भाई एक बार चेक करते हैं वो ड्रोन तो नहीं है। ये तेरे को ड्रोन लगा है, इतना बड़ा ड्रोन, पूरे हाथ का फोटो खींचने क्या? तुम लोग बात समझ रहे हो? ये लोग ने मैकेनिक को उठाया, मतलब पहला ये लोग वसूरज लोग को उठा रहे हैं। क्या बात कर रहा है? जल्दी अंदर, अगली बारी तेरी है। अरे यार उनके सामने तो बेइज्जती मत कर। उनके सामने मतलब वो क्या तेरे जीजा जी जो वीनस चौक से आए? ये क्या पागलपंती है? भूत तक तो ठीक था, पर ये अब ज्यादा हो रहा है। ये तो मेरे माँ बाप की ओवरथिंकिंग के भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये सब कार्तिक की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैं क्या राकेश रोशन हूं जो मेरी वजह से हुआ है? नहीं तुझे बोला था इतना कोने में मत आ, बंद है ना। हाँ मेरे तो मामा ने बोला था ना अंबोना जाओ, मानसून का सीजन चल रहा है, वर्षा ऋतु में एलियन दिखते रहते हैं, महफिल जमेगी। गाइस इधर आओ, इधर आओ। क्या चल रहा है? Your phone's not gonna work. अरे नाके पे लफड़ा नहीं चल रहा है, यूएफओ है, पागल हो गया क्या? ये कारण तेरा फोन भंगा है ना। तेरा बात मत कर। सॉरी कार्तिक। अरे यार माइक्रो यूएसबी तेरा फोन दे रहा है यार, मेरे को रिकॉर्ड करना है। अरे अपने फोन से करना। I'm not gonna lie, I'm finding it funnier, घटिया क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। और faster. 90% दुनिया के यूएफओ वीडियोस घटिया क्वालिटी में रहते हैं, तभी तो लोग विश्वास करते हैं। अपने अच्छे फोन से अच्छा रिकॉर्ड करोगे तो लोगों को लगेगा वीएफएक्स है। अरे चुप हो जाना, अरे चुप हो जाना। अरे यार 100 मिलियन व्यूज। अरे चुप हो जा, जिंदगी में पहली बार यूएफओ देख रहा हूं, उसमें भी तेरी फटफट सुनी। तुम चाहते हो मैं वायरल नहीं हूं। Again, they should have used a model. If they used a model, that would have looked so much better. It's the fact that the whole thing's just reliant on CGI. Just reliant on CGI. I don't believe you should just use CGI for a scene. You should have something there. Like, if you do an explosion, don't just have a CGI explosion. Actually blow something up. And then use CGI to make it look bigger. Look bigger. It's just, what the heck? ये लोग कुत्तों को क्यों उठा रहे? अबे ये यूएफओ है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी? They're supposed to get ये लोग cows. तो सुअर को भी उठा रहे हैं। लगता है हर कैटेगरी में अगला नंबर जग्गू का ही होगा। There we go. ये तो गायों को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब इंडिया टीवी वाले सही थे, एलियन गाय का दूध पीते हैं। क्या इतना दूर ये लोग दूध पीने आए हैं? इनके प्लेनेट में तबेले नहीं है क्या? I just know that they take cows. That's all I know. Yeah, I mean, there's always that word. It's always a cow being taken up. Always. अरे यहाँ से निकलने का सोचो। कैसे निकलेंगे वास्को डी गामा? कौन था मामा? भाई चुप रहे, वो बाहर हल्की हल्की चीज को उठा रहे हैं। सीधा खड़ा हो लौड़े, हिम्मत। अभी तो घर पे ही है ना। चुप। ये भाई मैं क्या बोलता हूँ, घर में जितने कांटे चमचे ना उसको घर के बीच में लाके सुरंग खोदते हैं ना, सुबह तक हाईवे पहुंच जाएंगे। अबे अंडमान के भगोड़े कह दी, चम्मच कांटों से खोदना शुरू करेगा तो 2 साल में तो सिर्फ दरवाजे तक पहुंचेगा। अरे तो सीधा दरवाजे से चालू करते हैं ना। अरे भाई इसको चुप कराओ, इसको बोल मेरे मुंह में लगे। सुनो ना, मूवीज ऐसा सोचो ना, अगर कोई अटक जाता है तो सर्वाइवल के लिए क्या करता है? बॉलीवुड की पिक्चर होती है तो हार नहीं मानते, हॉलीवुड की पिक्चर होती है तो जमकर सेक्स करते हैं। हाँ तो हम मान चुके हैं। और सेक्स तो मुझे तुम लोग के साथ करना है नहीं। अरे सर्वाइवल मतलब कुछ फ्लेयर गन जैसा, जिसको हमने सिग्नल के लिए आसमान में छोड़ पाए। ए बहला है ना दिवाली के पटाखे, अरे रॉकेट है, जला देना। हाँ, और अगर वो It's रॉकेट जाके glowing यूएफओ in the पे sky, फटा, man. हरामी इंसानों ने हम पर हमला किया है। संडास में बहुत सारे आईने हैं, सर पे रख के भागते हैं, अगर उन्होंने देखा भी तो खुद की शक्ल दिखाई देगी। हाँ, और फिर वो नीचे देख के बोलेंगे, अरे ये अपना आदमी नीचे क्या कर रहा है? ज़ूप, फिर हो जाएगा आओ 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 आओ। शिट यार, ये एलियंस कितने स्मार्ट है। एग्जैक्टली, तो अगर हमें सर्वाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। मुझे चलेगा, मुझे वैसे भी आदत है। ठंडे दिमाग से सोचते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। Bro, it's made in India, and we have to do a lot of hard work to taking permissions, ED code for real explosion. But that's the thing. It's just like, you can do controlled explosions indoors in front of a green screen. There are people that do that kind of stuff. But what I'm talking about is literally a model. You could make a model and just hang it in front of the green screen, you spin it, and then you use CGI to just plaster it on top to make it, just add more depth to it, add more realism to it. So that way, because when there's something real, it just looks, well, guess what? More real. Sure, back in the day, if you look at the old films that used models, like if you look at the original OG Star Wars,
sure, you can tell they're toys, but when you overlay CGI on top, it kind of just makes it look far more realistic. यार ये एलियन एग्जैक्टली इंडिया कैसे पहुंचे? अरे पिछले Yeah, a साल हमारे massive यहाँ ship से in the चंद्रयान sky. What a गया flare's था, gonna उसके do? follow करके आगे Exactly. होंगे। पॉइंट है दुए ने मुझे भी कहाँ पहुंचा है यार लेकिन ये एलियंस तो न्यूयॉर्क जाते हैं, यहाँ पे कैसे आए? भाई अमेरिका ना बहुत महंगा हो गया है, सबको नहीं परवड़ता अभी। ये रशियन ने पूरे यूनिवर्स को हिट करके रखा है क्या अरे रिसेशन होता है वो। तो I like that joke. Since it's relevant to my situation. अरे हम ऑलरेडी बर्बाद है यार और कितना बर्बाद करेंगे तुम लोग ने इंडियन एलियन मूवीज देखी है? देखिए, सिंपल थंब रूल होता है। इंडिया में आए हुए एलियंस अच्छे ही होते हैं, बेचारे करते क्या है? मैक्स टू मैक्स घास फूस खाते, धूप चूसते या कसौली टाइगर्स के अगेंस्ट बास्केटबॉल की मैच जिताते। तुम लोगों की नॉलेज Or you're retarded and then you आगे बढ़ते हैं। get क्या superpowers. होगा? तेरे बच्चे सुपर हीरो बन जाएंगे और सिंगापुरी सर्कस में Oh, that's the one they're talking about. आगे बढ़ो से ये मतलब नहीं था कि तुम लोग कोई मिल गया से क्रिश पे पहुंचो। क्या करे, कोई मिल गया टू तो आई नहीं थी। भाई तो क्रिश 2 भी नहीं थी। मतलब क्रिश 3 क्रिश 2 है और क्रिश 3 को मिलकर 3 भी है तो कोई मिल गया 2 कौन सी है? वो तो कृष्ण है ना। इतना कंफ्यूजन ये रोशन फैमिली ने सबको अंधेरे में डाल दिया है अरे तरन आदर्श पॉइंट I hate how I know some of these movies. पूरे अर्थ को छोटी ये लोग इंडिया आए हैं, मतलब कुछ तो ऐसी चीज है ना इंडिया में जो इनको चाहिए। पॉपुलेशन? इसका मतलब ये लोग हमसे सेक्स सीखने आए। फिर तो जग्गू को कोई टेंशन ही नहीं है। जग्गू तेरे को तो नहीं उठाने वाले, चिल कर, रिलैक्स मत। सालों मेरी जितनी बेइज्जती करते हो ना, मन करता है खुद को एलियंस के ही हवाले कर दूं मैं। क्या बात कर रहा है जग्गू? वो लोग तेरे को नहीं उठाएंगे, उनके प्लेनेट पे भी बहू बेटी है भाई। कार्तिक मेरी बात प्लीज सीरियसली सुन, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है ये लोग हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करने आए हो। अच्छा, तो ये लोग गांव में निरोध बांटने आए हैं। अरे वैसे नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब क्या? जेनोसाइड। जियो रे आने दे साले को अरे ऐसा 20-30 पत्थर फेंक के मारूंगा ना भाग जाएंगे साले अबे नल्ले वो एलियंस है, लुक है टपोरी नहीं, जिसके साथ कॉलेज में गैंग करने जाए। क्या एलियन हाइप किया है तुम लोगों ने? एलियन होते कितने? ये 3 फुट मतलब बड़ा कुत्ता। अच्छा बड़ा कुत्ता, अगर बड़ा कुत्ता घर आ गया फिर? अरे वो चिकन की हड्डियां पड़ी है ना, ऐसे फेंकेंगे यूं करके बुलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, अपना वफादार बना लेंगे। तुम लोग कैसे अज्यूम करो कि एलियन 3 फुट होगा? 9 फुट का हुआ तो हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी तो 3 फुट के 3 एलियन होंगे, एक के ऊपर एक, 3 9। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, एक से एक फॉल्स फाइटर्स दे रहे हो। ये छोटा टपोरी बोलता है पत्थर मार के भागेंगे, ये स्पाइक्स की दुकान बोलता है चिकन की हड्डियां सुखाएंगे। इससे पहले भूत के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भूत को तो कम से कम हनुमान चालीसा सुना के भगा सकते हैं, पर ये एलियन के सामने कौन सा मंत्र पढ़े? क्या हनुमान चालीसा मोर्स कोड में लिख के भेजे क्या? तुम लोग अपना पॉडकास्ट जारी रखो, मैं जा रहा हूं। कहाँ एलियन से मिलने? नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने। You need the mathematician to figure out how to send a code up to the skies. इधर खोखला लग रहा है, इधर से खोदना चालू कर दिया, आधे घंटे में निकल जाएंगे। दुनिया की सबसे यूजलेस इन्वेंशन ये अवन। खाना तो गर्म होता नहीं है, सिर्फ प्लेट गर्म करता है ये। पिंकू, हम लोग घर में फंसे हुए, इसका ये मतलब नहीं है तू घर में बैठ के अवन की पिचिंग करेगा मेरे साथ। अरे मेरे पास और भी ओवररेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है कार्तिक। इसको दरवाजे के बाहर चिपकाते हैं। ओ ए आई आ कला ना ओ एलियन कलाना। अबे मैं यहाँ से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो यूएफओ से क्या खाक पड़ेगा? क्या जायब है? Oh my gosh. देख, यूएफओ घर के आगे देखा था, लेकिन ये घर का पिछवाड़ा है, यहाँ से भागने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। क्या? किसी को जाके रास्ता चेक करना पड़ेगा। वही ना, सुअर के गले में घंटी बांधेगा कौन? अबे बिल्ली होती है। किसको भेजें? हम एक काम करते हैं, हम लोग ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं हमारे ग्रुप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन से लेकर लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन तक, तो उसमें जो लास्ट आएगा ना उसको भेज दे। लिख प्रायोरिटी लिस्ट। नंबर 1 पे आता है पिंकू। I have a feeling he's going to be the least important. पिंकू ना पढ़ा लिखा है, तो कल को अगर एलियन नीचे आ गया तो उसे बात करने के लिए एक एजुकेटेड डिसेंट आदमी तो चाहिए ना। पॉइंट नंबर 1 पे पिंकू। और एलियन से बात क्या करेंगे ये तो उसको हम दोनों बताएंगे ना। तो नंबर 2 पे मैं, नंबर 3 पे तू। नंबर 2 पे तू क्यों? मेरी हाइट तुझसे ज्यादा है आलन। ठीक है। फिर आता है, आई नो वेरी ऑड चॉइस बट करण। करण क्यों? आई नो थोड़ा टपोरी है, लेकिन क्या बटुआ मारते मारते ना फुर्तीला हो गया एक माकूड़े की तरह, तो किधर ना किधर काम नहीं जाएगा। पॉइंट। नंबर 4 करण। फिर आता है जशु। जशु ना घरेलू बच्चा है, मतलब घर पे ज्यादा रहा है, मतलब घर का खाना खाता है, तो मतलब बाहर का खाना नहीं खाता। तो जशु ना बहुत न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस? देख, आई डोंट नो हमें इस घर में कितने दिनों सर्वाइव करना है, तो कल को अगर राशन खत्म हो गया तो हाँ, वैसे भी मैंने किचन में मस्टर्ड सॉस देखी थी। Like I said, he's going to be the one that is the least important. उसका हाथ नरम है यार, इसलिए इन द फेवर। तो 5th पे जशन। फिर आता है तनी। तनी। तनी एक नंबर का भंडवा है, आई मीन इट्स पुट ऑन द टेबल। वो मरेगा भी ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा क्यों मरा है, ऐसा भंड रहता है। तो अगर थिंग्स गेट मेसी तो अपन तनी की बलि चढ़ा देंगे। तो नंबर 6 तनी। तो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से तनी को भेजते। नहीं यार, लेकिन तनी को कैसे भेजेंगे यार, उसकी तो बलि चढ़ा देना। एंड जशु को खाना है, एंड मुझे करण को तो नहीं खाना है। I mean, कोई तो मिसिंग है ना।
तुझे पता है तू हमारे ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंट आदमी है? तू हमारी टॉप प्रायोरिटी पता है हम लोग ने लिस्ट बनाई और सातों बार तेरा ही नाम आया जग्गू 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 भाई मैं गया तो एलियन उठा लेंगे मुझे इतनी बड़ी बात है ये, तू हमारे ग्रुप का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट बनेगा। एस्ट्रोनॉट चीत तू अरे ये इस दुनिया का सबसे पहला मर्द बनेगा मर्द जिसे एलियन उठा के लेके तेरी जाएंगे लड़कियां तुझको मरेगी, रोज तेरे लिए चूड़ियां तोड़ेगी मेरा जग्गू तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। अरे बच्चों को आसमान दिखा के बोलेगी वो देखो पापा पापा अरे इस धरती की लेडीज, बड़ा सोच दोस्त बड़ा, उस धरती की लेडीज ले तू तो फॉरेनर हुआ ना। स्वयंवर होगा तेरा स्वयंवर इंटरगैलेक्टिक स्वयंवर तेरा हनीमून असली के मून पे बनेगा। वहां के बच्चे तुझे देख के बोलेंगे अरे यार चुप करो नहीं बनना मुझे किसी का पापा क्यों चढ़ा रहे हो सूली पे चेक करने के लिए कि बाहर क्या चालू है। बाहर की दुनिया नहीं देखनी है तुझे तेरे घर पे ही रहना है बाहर ही देखना है ना क्या चल रहा है हाँ इसका ड्रोन भेजो ना फिर तेरे पास ड्रोन है इतनी तेज तेरे पास ड्रोन है तू अब बता रही है कार्तिक महंगा है वो, आपके पैसे चोरी करके ये ड्रोन लिया था मैंने। How do you think that you've been getting these shots? You've used a drone. तूने बोला था ना ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं हूँ हैं? ये कब हुआ? एक मिनट बड़े बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो ड्रोन मेरे को उड़ाना चाहिए था अबे हट, तेरे को साइकिल चलाने का कोई लाइसेंस ना दे ड्रोन चलाएगा। हट। ए भाई मेरे को देना ड्रोन चलाने, मेरा बचपन से सपना था रे। तेरा बचपन में सपना था ड्रोन चलाने का? हाँ वो बचपन में ना मैं टीवी पे रिमोट कंट्रोल कार का ऐड देखता था, मैंने अपने बाप से मांगा भी एक दिन रिमोट कंट्रोल वाला कार। मेरे बाप ने मेरे से टीवी का रिमोट भी छीन लिया रे। हट चोर, तेरे को ड्रोन उड़ा दिया ना, सीधा उड़ा के अपनी बैग में डाल देगा। एग्जैक्टली ए पीछे गद्दी करके रखिए बेचारे मेरे हट बेचारे मेरे भाई को समय दर्द हो जाएगा सही तो बोल रहा है वो अगर इस घर में कोई ड्रोन उड़ा सकता है वो एक ही आदमी है मैं एक मिनट तू तो चुप कर प्रेशर कुकर की सीटी चुप अच्छा सालो भूल गए बचपन में हम जब भी जीटीए खेलते थे हेलीकॉप्टर का मिशन कौन पार करा देता था मैं मेरे पास आते थे तुम लोग भीख मांगने के लिए कार्तिक कार्तिक पार करा देना तो अगर कोई ये ड्रोन उड़ाएगा वो मैं हूं इस मोमेंट के लिए मैं बचपन से ट्रेंड हूं हाँ बचपन की बात से याद आया, याद है बचपन में तू अपनी बैट लेकर था क्रिकेट खेलने के लिए, भले ही पहले बॉल पे आउट होता था, फिर उसके बाद बोलता था ये मेरी बैट है, ये बैट लेकर मैं घर जा रहा हूं करके चला जाता था। तो आज ये मेरी बैट है और इससे बैटिंग सिर्फ मैं करूंगा। बात करते हो, कभी इतना महंगा ड्रोन भी देखा क्या तुम्हारा? भूखा रहूंगा, तू तो इससे दूर रहेगा। जाने दो क्या ही बोलने का होते हैं कुछ लोग ये तो ऐसा ही है कभी कुछ शेयर नहीं करता है बचपन से ऐसा है एग्जाम में एक बार मैंने से पेन मांगी थी नहीं दी मैंने देखा था इसके पाउच में 3 पेन थी इंक सूख गई फेल हो गया मैं फिर भी नहीं दिया इसने मेरे को इसके घर पे भी यही हाल था इसके खिलौनों को टच करता था तो इसकी मम्मी बोलती थी अपने घर से खिलौने लेके आएगा क्या करे अपब्रिंगिंग ऐसी है तो नेचर अरे चुप ना, चुप। हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे बोलते थे जाओ बेटा शेयर करो अच्छे थे हमारे माँ बाप अरे काम करो, ड्रोन ले लेना, कुछ खा चलेगा, जाओ। ऐसे तो बात नहीं करते हम लोग यार कोई कुछ मांगे तो ऐसे तो नहीं होता यार हाँ अब देखो पापा कैसे ड्रोन उड़ाता है। He's gonna destroy it. Attitude mode. Fly with caution. अरे दरवाजा तोड़ के बाहर जाऊं, दरवाजा तो खोलो। इनको तो बाद में देखता हूँ मैं It had some funny moments. It had some funny प्रॉपर्टी क्या moments. दिखा रहा है एस्टेट एजेंट है क्या घाव की तरफ लेना ले रहा हूं ना, 2 मिनट रुक। Look up. Look up. Look up. ले ले आगे ले भगा मत आदन 1 मिनट भगा मत 1 मिनट रुक ये क्या हो रहा है इधर फार्मिंग। इतनी रात को कौन सी खुदाई चल रही है छोड़ तू आगे ले Every now and then they have like an element of creepiness. अरे ड्रोन नीचे ले That is way too dark. I don't know how you all see it. नहीं Eggs? यहाँ से निकलने का रास्ता चेक करते हैं अरे तू आगे ले आगे ले कार्तिक तूने बताया था कोई तो एक रास्ता है, कच्चा रास्ता जो हाईवे कनेक्ट करता है। अरे यार मेरे को याद नहीं है मामा ने बताया था ये रास्ते पे एक्चुअली 2-3 कच्चे रास्ते 1 मिनट पीछे ले So it's blocked off. इधर राइट में एक रास्ता जा रहा है इधर ले लेके जा आगे What the fuck? ये रास्ता भी लोग भाग में जाए रूट्स हम लोग जंगलों से ट्राई करते हैं हो सकता है जंगलों में से कोई पैच हो जो हाईवे पे खुलता हो अरे तो जंगलों की तरफ से
Like what? Oh, great. They're having a crop circle now too. Like what was it? Cowboys versus aliens, where what they were here for was, well, I think it was gold. But isn't there one where the aliens are literally on Earth? I forget what film it is, where they're here just for the water. Because Earth has so much water that the aliens needed water. Because apparently they had like just a spaceship structure that traveled through space and they needed to have more water. Yeah, I don't remember what film that was. Skyline? Was it Skyline? Sorry, I enjoy sci-fi and fantasy. And yeah, I enjoy a lot of stuff, but it's like there's so many films that have so many elements, and this is a bit of it. Yeah, the cowboy versus aliens. They were there for stealing the gold. They needed gold, and then I think it was Skyline where they were stealing the water. So they're probably there for a natural resource, but I'm guessing they were eggs. Be revealed later. All right. ये क्या है? जो भी हो, हम इस रास्ते से नहीं जा रहे। आर्यन पीछे ले, पीछे ले। दूसरा साइड से चेक करते हैं। Bye. क्या हुआ? ये ड्रोन आगे नहीं जा रहा है, लग रहा है रेंज के बाहर है। क्या बात कर रहा है? कितना रेंज है तेरे ड्रोन का? 3 किलोमीटर। नहीं जा रहा है यार, देख। पीछे ले। देख, पीछे आ रहा है। Fuck! अभी हम लोग कैसे निकलेंगे? Oh, there's a barrier. मैं ड्रोन वापस मंगा रहा हूँ यार। What'd I say? How'd the drone not get fried? Sorry, fried. Sheesh. I'm not gonna lie. Just keep my mouth shut and actually enjoying it is a little more fun. Does it still have and speeding it up? Speeding it up was honestly far more enjoyable because I think they spend too much time in the room and it takes forever to get out. Yeah, to just get out and do other stuff. So I did enjoy that. I did enjoy it a bit more. Keep my mouth shut and just enjoy it. A bit of a few things here and there. I like that. I really like that. Yeah, far more entertaining. Far more entertaining that time around. Just need to be quiet. Be quiet and enjoy it. Every now and then they have an element that is absolutely well done. When they introduce like the horror, I really like that. I really liked it. I think it's well done. Even now that it's primarily about aliens, they didn't really have money of that scare tactic. But when they had like people digging and just digging in the field, that was a little eerie. That was a little eerie, but yeah, I enjoyed that. It's an expensive drone. Well, yeah, true. They weren't gonna blow up the drone, of course not. But they used CGI for the bird. They could have done it for the drone. They used CGI for the spaceship. They could have flown it in and then just done a firecracker in the air. I like in the next scene, like because you keep the how you do a shot like that. It's like, again, you're outside, so it would be tricky to do something like that. You have to shoot it in-house in front of a green screen. Like you have the drone come in, keep the camera in the same spot, and then you edit it to where you throw a firecracker literally at the same spot and it explodes, and then you edit those two together so you have the explosion, you have the drone flying towards it, and then on top of that what you do is you use CGI to make the explosion look far more extravagant, and then you use the green screen background, you remove it, and you put it in location. Of course you have to be keen on where the lighting goes and all that. There's a huge element to it, but it would have been incredibly spectacular. Yeah, bro, you can watch in 2 times speed, but please watch chapter 5 in 1. Yeah, I just want to get through the story because everyone's saying like the main point of everything is chapter 5 because that's the conclusion. So that's where everything kind of tapers out. So I'll get to that. I was watching it at 1.5. I enjoyed it like that. I could catch along. I was able to understand enough of the Hindi words to where I don't need to continuously read the subtitles, because if I'm watching it in, well,
Tamil, I'd have to just be staring at subtitles, slow it down completely. But yeah, I did enjoy it this time around. Have you seen Cabin in the Woods? Creep. Yeah. So, some of those good horror films are good. Like, they do nothing for me, but they just have an eerie. Like, I feel like in horror films, it's the environment that sells it. They are one of the easiest genres to do, but they have to be done correctly. It has to be done correctly in order for it to be great. You can easily make a horror film that works, but they're just not good. But when they're done correctly, it's oh my gosh. Oh my gosh. You guys get a video? It was so bad. And don't forget to like and subscribe. Wait, where's that?